see here that what I'm doing. Okay, so you can see my screen, right? Yes. Okay, so very first, just create one folder. I have created the folder name EG1306, which is our subject name. So just create the folder, whatever the place. I have created it in the D drive. Just create it. Please do each and every step with me. And those who don't have a computer or a lap, please write down the steps in your notebook. Okay, after creating the folder, whatever the name you have given here, I'm just writing down the first program. The folder name is my, or okay, better I write the practicals, and inside the practicals, just writing my first practical, that is first program. That's it. Eventually we'll give the actual proper name or the meaningful name, because this is the first and introductory thing. Okay, so everyone is with me. I hope you all are on the same page. If not, then you can ask me, I'll wait. Can you repeat? Yeah, sure. You just have to create the folder for your ease. Like here I have created the subject name, then practicals, and the first program folder. So what we will do, see, in the practical folder, we will create a folder for each and every practical, because here whenever we will do the program or a practical, the single practical may have a more than one, two or three files, but definitely more than one file. So we'll create the folder for each practical. Everyone, good? Whatever you are doing on your laptop is not visible on the screen. This is just showing the meet icon and all that. You, means you cannot see my screen? No, Yes, ma'am. I can see, but it is it is not like showing the things you are doing on your laptop. Oh, just wait, let me share it again. Okay, Okay. now fine. Yeah. Okay, so see what I have done here. I have created one folder with the subject name. Inside the folder, that is a one practical folder. And inside that folder, we will create the folder for each and every practical. The reason is your single practical will contain more than one file. So हम लोग क्या करेंगे, एक practical की जितनी भी files होगी, we'll keep all the files in a single folder. Understood everyone? Yes, ma'am. Okay, so चलो यहाँ तक कर लो सब लोग. Folder 1, Done, first ma'am. program. Done? Okay. So now inside that folder, here, come here. See, so this is the place where we will create our files. Now open the notepad. Open the notepad. Those who don't have computer, please write down the steps. Open the notepad and just type whatever I am typing. Do not save it right now. I'll tell you how to save it.
And just acknowledge me once you are done. Done, ma'am. Done, ma'am. Okay, now just save. How to save it? So see, keep in mind how to save this file. Go to the location, जो हमारा first folder है ना, at that place. See practicals and first program here. Come at this location. And here I'll just write first dot html, most important part to save the notepad file. First dot html. अगर .html नहीं लिखोगे तो it will not work. So please make sure that you have saved your file with the extension .html. Done? Yes, ma'am. Okay, and just click on save. So see, if you notice, when you save your notepad file, it will take some symbol of your default browser. जो भी आपका default browser होगा, it can be Internet Explorer, it can be Firefox, it can be Mozilla, any. Here I am using Chrome, so it is showing me Chrome. So whenever you save your any text document with the extension .html, it will create your browser file or the web page. We call it a web page. तो ऐसा आना चाहिए. If you all can see this in your laptop, then you are going well. What, ma'am? What, ma'am? Can you please repeat again? Whenever you will save your any text file, this notepad file with the extension .html, your file will be converted into the web page thing. So you can see the default browser symbol or icon before your file name. Okay. Right? See, अगर मैं एक normal text not file create करें, I'm just creating a simple or a normal notepad file. So see, this is the symbol. Okay, I think Ma'am, where to okay. find the location, ma'am? वो location. You said that we first have to go to location. So where is the location? मतलब यहाँ से जब आप लोग सेव करोगे ना फाइल सेव, Yes. so it will give the pop-up window. Okay. We have to save. Oh, I was Yeah. saving save as करके मैं save कर रहा था. Go एक for the मिनट. save. Okay. So see, here inside my EG1306 practicals and one, my first program, I got files. So this is your default notepad file icon. But when you save your notepad file with the .html extension, you will get this symbol. The symbol can be different in your laptop because I am using Chrome. So this is Chrome icon. अगर आप लोग Internet Explorer यूज कर रहे हो या कोई Firefox है, so change होगा. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. So this is my original notepad file. Right? Just write down this. Angular bracket, inside the angular bracket, small letters HTML, and at the end, angular bracket /HTML. Just write down this. What is this and why we are writing? I'll explain. But right now, just do it. Ma'am, there's one doubt that we need internet connection for accessing Notepad. No. Okay. Ma'am, Yes. when you were writing on this notepad, you just brought those two angular brackets at once and then you typed that HTML inside that. So how did you do that? Nothing. I just pressed shift and less greater than sign. I moved my cursor and write Oh, I thought HTML. I thought there was a shortcut to that or something. No. Okay. No. Yeah. It's only because of the practice of long years.
Ma'am, will you teach us how to code also? That is not in your, I think for the BA, you are BSc, right? BSc student. Yeah, BSc botany. बॉटनी वालों को कोडिंग नहीं आता, मैथ स्टेट वालों को आई टीच प्रोग्रामिंग. Okay. Okay. Okay, so done guys? Yes, ma'am. Okay. Who asked the question, Abhi? That will you teach us code? I did. Oh, To name, one name, to Ishan. name. Okay, Ishan, there is my YouTube channel. You can follow that. I mean, you can watch the videos there, whatever I teach in the coding, if you want to learn. Is there any video on web development? Not actually. No, no, no. Ma'am, please put one. Please put one. Okay, let's see. अभी हम इसके ऊपर focus करें. Yeah, and you can send the link on the WhatsApp group. Okay, fine. Okay, so I hope you all are on the same page right now. So you all are done with this. So see, this is, if you remember in the first lecture, I guess we learned about the input, process and output, right? So this page, this notepad file where you are actually writing your HTML script, we never say we will never use the word code, because HTML, it's not the coding, it's a scripting thing. So what we are doing the scripting for our page. We want to develop our web page, and so we are writing the script for our web page, right? So whatever we will write here, we will get the output in the browser. So now the next thing, click on this icon and what happens? You will get a blank page, Yeah. right? And on the top you can see the name of the file, first.html. Whatever the name you have given, you will see the name of that page here, Yes, Yes. ma'am. Yes. right? Okay, so now see, ऐसा ही होना चाहिए जैसा मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोगों का स्क्रीन भी वैसा ही होना चाहिए right now. So now what I'll do, I'll write the script, and in parallel I'll refresh the page so I can see the changes or output, right? Okay, next, head, and in between the head I'll write my first web page. Just do this. After doing this, I'll explain that what is this angular brackets and slash and why we do all these things. Write down this. Done, ma'am. Okay, and after writing, you can refresh your page. So see what you can see. So this is your output. Yes, ma'am. Everyone got it? Yes, ma'am. Okay, so see. Okay, one Ma'am, more thing. ma'am. Yes. मैम मेरे में नहीं आ रहा है. सेव करना पड़ता है ब्रो. Every time you have to save your notepad and then refresh your browser. Okay. मैम वो सेव किया तो भी जो आपने कहा था ना क्रोम करके आएगा, वो तो नहीं आया मेरे में. हाँ, मेरे में आ गया. .html किया था. हाँ, वो डॉट फर्स्ट लिख के .html किया था मैंने, इतना किया था, वो तो नहीं आया फिर. Then create the second file, क्योंकि there must be some mistake or some error. कौन सा आइकन दिखा रहा है? कुछ नहीं, वो सिंपल डॉक्स वाला आइकन दिखा रहा है. नहीं. There must be something wrong when you save the file. Do it again. Delete your that file and save it. और save as भी कर सकते हो. सेव एज में तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस पूछ रहा है और वो ठीक से सेव हो भी नहीं रहा है. वो एक कोई मूडल पे एक असाइनमेंट था ना, उसका मैंने वो किया था तो वो भी नहीं हुआ था मेरा. अभी कहाँ असाइनमेंट करना था लेकिन. अरे पता नहीं, कुछ मिल गया था मुझे तो मैंने अभी. ठीक है, अभी हम इसके ऊपर फोकस करें फिलहाल. आ ही नहीं रहा है. Do the whole process again quickly. Delete your file, create one text notepad file, save it with the .html extension. There must be something wrong, otherwise आना ही चाहिए.
आ गया आ गया आ गया आ गया What's your name? What's your name? मैम अभिनव सॉरी Abhinav. आ गया था आ गया ठीक है. Okay, so I think Abhinav and Ishan बोला ना the other name. Yeah. Yes, ma'am. सिर्फ आप दोनों ही परफॉर्म कर रहे हो लगता है, बाकी सब कुछ कर नहीं रहे हैं. Anyways, let's do. Okay, so see here you can see the change. So moral of the story, whatever you will write in this notepad file, you will be able to see the effect or the output in your browser. We will learn different types of designs, images, and text formatting and tables, and how to actually create a simple web page or a static web page, that we will learn but gradually. But ultimately you will have to write everything in this notepad file. Is this clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so HTML stands for what, guys? Hypertext markup language. Okay, hypertext markup language. And HTML works with the tags. So whatever you see inside the angular brackets, it's a tag. So HTML is a tag. Head is a tag. I'm using the word tag, right? So HTML works with the tag. So here you will have a like a long list of different types of tags. So whatever you want to do, suppose you want to write the paragraph, you have a tag. If you want to write your text in a bullet format, you have a tag. So for everything you want to insert the image, you have a tag. If you want to create a link, you have a tag. So for each and everything there is a big list of tags, and we will learn all the necessary or the basic tags here, right? Okay, so this is about the tags. There are two types of tags. One is a single, and sometimes you can sort of paired tag. Paired tag. What is the meaning of paired tag? So whenever you open the tag, you have to close it this way. If I say HTML, I have opened the tag, I have to close this tag. Suppose I am not closing the tag, it might be possible, there are chances that I won't be able to see the effect, right? So the meaning of the paired tag is you have to close that tag. So when I write HTML, so this is my opening tag. But when I say /HTML, this is my closing tag. So every time whenever you use the tag, do not forget to close it. Clear? Yes, Okay, ma'am. ma'am. Okay, so हम लोग धीरे धीरे ही करेंगे, like बहुत आराम से, that how to write and what to write. When you write the HTML scripting, there is a one standard format to write the HTML. So very first you need to start your script with the HTML tag, right? So always open it and close it. So this is, so in between these two tags, you have to write your all the scripts, all the statements and all the codes and whatever the word you use. So everything we will write over here, HTML. Then there is a title tag, and then there is a head tag. I'm just writing the Tags. structure. Okay, so this is the standard structure. So in this body tag, inside this body tag is my actual web page. This white portion, जो हम लोग white portion देख रहे हैं पूरा, this is my web page. So whatever you will write inside the body tag, वो हमारा actual web page content होगा. Head we don't consider as a web page because it's a heading of your web page. We don't consider it as a content. So the content, your all the contents you can write over here inside the body tag. Easy? Yes, ma'am. Okay, तो चलो इतना लिख लो सब लोग पहले, नोटपैड में इतना लिखो. मैम मतलब जो पहले लिखा था वो सब हाँ वापस हाँ डिलीट कर हाँ दें? हाँ, यस.
हम एक सेकंड लिख रहा हूँ एक हाँ हाँ हाँ, यू कैन टेक योर ओन टाइम, मतलब इतना ज़्यादा टाइम भी मत देना, बट हाँ आराम से करो। डन मैम। ओके चलो, डन एवरीवन? यस मैम। यस मैम। चलो अब हम थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है? वी विल डू द लिटिल मॉडिफिकेशन, वी विल सी दैट क्या होता है हमारे ब्राउजर में। सो लेट्स ऐड द टाइटल। आई एम जस्ट एडिंग द टाइटल। what will give थोड़ा रैंडम लेते हैं तो हमें समझ में आएगा कि कहाँ पे चेंज हो रहा है। दिस इज द टाइटल ऑफ माय पेज, मैंने इतना लिखा, ठीक है? सो दिस इज माय टाइटल और हियर आई एम राइटिंग इन द हेडिंग, दिस इज द हेड ऑफ माय पेज, मैंने सिर्फ इतना लिखा। and here I am writing, this is the area to write the content। देखो कितना किया मैंने। this is my HTML tag, then this is title, so in between opening and the closing tag you can write anything, right? this is your head tag and this is your body। चलो इतना करो, फिर हम डायरेक्टली आउट देखेंगे। मैम इतना स्पेस देना नेसेसरी है कहाँ पर? हियर? उसके नीचे? नो नो नो, वो तो आप लोग ठीक से देख सको, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस स्पेस, ओके ओके मैम, नॉट थैंक यू। नेसेसरी। और वो टाइटल के बाद फिर जो एक स्पेस दिया वो भी देना जरूरी है? नहीं 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 नहीं, नथिंग, नो। ओके। आप लोग ठीक से देख सको ना, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस स्पेस। डन मैम। एवरीवन? यस मैम। चलो अब हम इसको मैम run कर- मैम हाँ मैम हाँ देयर हाँ, इज अ डाउट मैम बोलो। we have to write in only small words under two brackets we वेरी can't गुड। write we can't write we cannot write in capital letters गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। किसने पूछा? मैं ही हूँ मतलब मैं, मतलब ईशान है या आशुतोष? आई डोंट। अभिनव लिखा है अभिनव, सॉरी। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे स्क्रीन पे ये दिख रहा है तो आई कांट सी योर नेम, इसके अच्छा लिए अच्छा मुझे ठीक है टैग मैं सर्च नाम करना पड़ेगा। ओके मैं नाम बोल के फिर पूछूंगा हाँ, वेरी गुड। So see, yes, Abhinav, good question. Every tag we will write in a small letters. It does not mean कि वो capital में काम नहीं करेगा, but yeah, in certain cases it won't work. So we'll always keep in practice that we'll write all the tags in the small letters. and we Fine? also and we don't have to leave that much space between two tags No, no, no. ऐसा देखो, अगर हम मैं बताती हूँ। I show you. Wait, I'll show you. ठीक है, हम इसमें changes करेंगे, so और all doubts will be cleared. चलो इतना हो गया सबका? यस मैम। Okay, now see, just run the code and see what you can see. Yes? मैम मैंने किया पण थोड़ा अलग ही आया है मेरा। क्या आया? चल किया क्या है। हुआ? मतलब मेरा आउटपुट की बात कर रहे हो? हाँ मैम, मेरा वो जो मैंने बॉडी में लिखा है और हेड में लिखा है ना, वो एक ही मतलब एक ही लाइन में आ गया है। What's your name? मैम इट्स ऋषिका। ऋषिका, देख लो जरा मेरा स्क्रीन भी, मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है, कुछ अच्छा आउटपुट नहीं आया है। ओके मैम। So see my screen as well. Okay, of course I know ऐसा ही होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि that how to solve this type of mess, all right? Problems. Problems, yeah, thank you for the word. Okay, so see, first, what is the problem? See, here you can see this is the title of my page. पहले वो क्या आता था? What was
first.html. First.html. So if you want to give the title to your page, you can write it in the title tag. So अब मैं थोड़ा थोड़ा modifications करूंगी कोड में वापस से, ठीक है? My first web page. So I given this title and now I'm also reducing the space. मुझे नहीं चाहिए space, तो HTML के तुरंत बाद I have written the my first page. थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे एंड रन करके चेक करते रहेंगे. ओके, सो आई गॉट माय फर्स्ट वेब पेज हियर, राइट. चलो मुझे और भी थोड़ा कुछ चेंज करना है. मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे वेब पेज का नाम आए www.mywebpage.com. मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है. Okay, so here you can see this thing, right? So normally whenever you open the browser, you can see the name of that website here in the title section. चलो यहाँ तक क्लियर सबको? यस मैम. ओके मैम बट आपने स्पेस घटाया तो उसमें तो कोई फर्क ज्यादा पड़ा नहीं. ऊपर नहीं, अभी तक हमने नीचे कुछ नहीं किया है. सी हमने हेड सेक्शन, हमने सिर्फ ऊपर का पोर्शन किया, यहाँ वाला. अभी हम लोग यहाँ पे आए ही नहीं है. ओके टाइटल. ओके थैंक यू. टाइटल नहीं किया. ओके, नाउ head. So now in the head tag I'm just writing welcome to my website. मैंने सिर्फ इतना लिखा. हाँ, चेंज देखते हैं क्या हो रहा है. आई एम रिड्यूसिंग द स्पेस एज वेल हियर. ठीक है, ये चेंज हो गया, बट एक्चुअली ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, राइट? नहीं आ रहा है. ओके, हाउ टू डू दैट? ओके, पहले थोड़ा स्पेस भी रिड्यूस कर लेते हैं. ओके, यहाँ तक ठीक है. सी व्हेन इट कम्स टू द रिड्यूसिंग द स्पेस, इस सेक्शन में ठीक है, बट बॉडी में जितना भी हम लोग लिखेंगे वी विल ऑलवेज मेंटेन द इंडेंट, राइट? तो हम उसको थोड़ा अलग ही रखेंगे ऊपर वाले एरिया से. ओके, सो टू राइट योर कंटेंट इन द नेक्स्ट पेज वी हैव अ टैग कॉल्ड BR. देयर इज अ टैग कॉल्ड द BR. अभी मत करना, पहले देख लो क्या होता है. ओके, आई गॉट द लाइन इन द नेक्स्ट लाइन, my statement in the next line. So BR stands for the break. Break line tag. Yes, break line tag, right? So you can write the BR tag if you, whenever you want to write your content in a next line. Easy? Yes, ma'am. यस मैम. Okay. Suppose I Right. want to give more space. तो ठीक है, थोड़े ज़्यादा tag दे देते हैं. 4 times break and run it. Okay. So I got the enough space. मैम आप डायरेक्टली कैसे रन कर ले रही हैं? नहीं, I'm clicking here, or also you can press the F5 shortcut. Three ways. Reload the page, फिर यहाँ से भी हम एंटर मार सकते हैं, and also you can press the F5. अच्छा, मतलब नोटपैड पे जब हम काम कर रहे हैं तभी अगर हम पूरा करके F5 प्रेस करें तो? See what I am doing. I am working here. I'm using the keyboard actually. So see what I'm doing. Control S मैंने press किया. Now I'm coming to the web page and reloading the page. This I'm doing. And now again maximizing my notepad file. ओके. Okay. Fine everyone. Yes, ma'am. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, बट हम लोग धीरे करेंगे. I'm just deleting this thing. Okay. Now let's make it little bit colorful. So when I say that there is a tag, this is the body tag. So every tag or almost every tag has attributes. Every tag has attributes. What is the meaning of attributes? Okay, first let me write it here. Whatever. Attributes. What is the meaning of attributes? The meaning of the attributes is when I say the body tag has attributes. What does it mean? It means that what are the things which I can do with the body area, this white page or a white area or a content area, what I can do with this thing. Okay, what I can do, can I give the background color to this body? Yes, ma'am.
So that Yes, ma'am. consider as an attribute. So how to write the attribute? After the inside the body tag, here you can write the attribute. So to give the background color, the attribute is BGCOLOR is an attribute, and each and every attribute has a value. So see, tag has attributes and attributes have values. So body is a tag, उसका एक attribute हमें मिला BG color, that is the background color. What color you want to give? Just write equal to and double quotes. There are multiple ways to give the background color. हम लोग सारे धीरे धीरे देखेंगे, but अभी सिर्फ इतना. Let's want to give the green color. ठीक है. So अब just सोच लो अपने माइंड में कि क्या होना चाहिए. When I run this, okay, one more thing. Whenever you write the script, because when you write the script there must be something in your mind that what you want, right, as an output. So before loading this page, always think that what you want or what it should be, right? और अगर वो नहीं आता है, it means there is something wrong. तो अभी what you think, क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्या होना चाहिए after writing Green this Green script? color. background. Green back. Green. ठीक है, इतना होना चाहिए. Okay, I got the green background. ये कौन है भाई? लेट लतीफ खुशी पटेल. Okay, right? So I got the green background. Okay, change it. हम इसको थोड़ा change करते हैं. मैम Yes. ये बॉडी एट्रीब्यूट्स वैल्यू वो HTML क्लोज टैग के बाद भी आ गया वहाँ पे, कहाँ पे? वो वेब हाँ पेज हाँ में. हाँ 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 हाँ, वो हमने कुछ किया नहीं है ना, इसलिए ये तो एरर है ना. वैसे देखा जाए तो हम इसको हटा देंगे, नॉट एन इश्यू. नहीं मतलब वो पूरा क्लोज हो गया ना, तो क्लोज होने के बाद फिर कैसे आ रहा कंटेंट वो उसमें? दिखाएगा. नहीं नहीं नहीं, वो दिखाएगा. उसके बाद जो चीजें हम लिखेंगे वो दिखाएगा सही, बट यू विल नॉट गेट द योर एक्चुअल आउटपुट. लाइक कुछ फॉर्मेटिंग किया है या कुछ है, तो वो सारी चीजें नहीं एप्लीकेबल होगी वहां पे. ओह अच्छा. चलो, तो हमने इतना काम किया अभी तक. चलो आप लोग भी करो. डू इट. चेंज टू येलो. बता देना जब हो जाए. Done, ma'am. Okay, so see, when we say the head or the heading, if you have noticed in your notebook or even in many websites कि क्या होता है, एक होता है टाइटल, फिर उसके अंदर सब टाइटल, उसके अंदर सब टाइटल, फिर उसके अंदर सब टाइटल, फिर उसके कंटेंट होते हैं, राइट? कई बार हमने देखा है कि लाइक एक मेन चैप्टर, उसके अंदर सब चैप्टर, फिर टॉपिक, फिर उस. सो हाउ टू डू दैट थिंग if we talk about the web page? So here we have different head tags. H1, close H1, H2, close H2. हम देखेंगे there are 6 head tags, H1 to H6. हम सब देखेंगे कि क्या होता है यहाँ पे. So first I'm just writing heading 1 and here I'm writing heading 2. Of course मुझे पता है that every time I need anything in the next line, so I'll write BR. यहाँ पे भी एक BR चाहिए, यहाँ पे तो है ऑलरेडी. ठीक है. सो कितना ऐड हमने, कितना पोर्शन ऐड किया. लेट्स सी क्या होता है. सी, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज और हेडिंग 2. ये हेडिंग है, सो आई गेस उसमें BR की जरूरत नहीं पड़ेगी, या हेडिंग हेड टैग है तो. दिस इज हेड टैग, सो इट डज नॉट रिक्वायर द ब्रेक, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ही जाएगा. सो 3, 4, 5, 6. सो इट्स अ रेंज 1 to 6. और हम ये भी नोटिस करेंगे कि क्या पड़ता है. मींस हैंडराइटिंग स्मॉल होती जाएगी. हाँ, we call it a font size. We call it font size. Right? और here
चलो सब लोग करो, खत्म करो ये मेरे साथ. चलो, do it. I'll show you what it should look like. So this is heading 1, 2, 3, 4, 5, 6. चलो, do it. एक्सक्यूज मी मैम, ये जो हेडिंग में BR हमने लिखा है वो ना लिखे तो भी चलेगा ना? बीच में नहीं चाहिए, ऊपर. आई थिंक आई नीड टू चेक वो क्या कर रहा है. लेट मी चेक. मैम वो चलेगा. तो वैसे भी हेडिंग आ ही जाएगा. हाँ हाँ, क्या करो मुझे नहीं पता ना. राइट, आ जाएगा. थैंक यू. थैंक यू. वेलकम. व्हाट्स योर नेम? ख्याति. थैंक यू ख्याति. वेलकम मैम. See, when you do the scripting or the coding, it is all about the experimenting, right? So it might be possible कि कभी ऐसा लगे कि BR की जरूरत है, कभी लगे नहीं जरूरत है. So just write and check what happens. You will get an idea. So few things are like you don't need to remember. You just Ma'am, need to whole apply. science is experimental only. Sorry? Whole science is experimental only. Yeah. Right. Let me know once you are done. Done, ma'am. Done, ma'am. डन मैम. Okay. चलो और थोड़ी चीजें करते हैं. Sure, let's work with the head. I'm just writing and I'll check what happens. Center. I think center or to align. I think center है तो गलत हो. I need to check this line. I need to check. Size 20. There's something I guess. Okay, I need to check, guys. Is it okay if we keep this much today? Ma'am, in my मुझे case, देखना पड़ेगा actually. I don't uh, remember right ma'am, now. I have another problem right now. In my case, there is not showing. There is not any color showing. It's a BG color you have used. BGCOLOR BG. is equal to Yeah. I double use quotes. BGCOLOR is equal to that yellow and Double quotes में. yes. In double quotes Which only. browser you are using? Chrome. Chrome only. Okay. Try this. There is that you taught us that heading thing, which is okay, but color. What happened? Color is not showing, man. Try this. Write down random any 6 digits. Okay. Try this.
Start with the 0 0. Okay. 0 0 Try any other words. 0 0 2 बोलो. 4. कोई भी. I'm just change the numbers randomly. 0 0 and then random 4 digits. मैम Yes. मैम एक डाउट है, ये हेडिंग की जो फॉन्ट साइज है वो छोटी क्यों होती जा रही है? वो टैग का कमाल है इसलिए. This H1, H2, H3, 4, 5, 6 are for that only. You don't need to change the size of the font. You can directly write down the specific font size using H1 to H6 series tags. ओके, थैंक यू मैम. चलो हो गया गाइस. इतना हुआ आपका बैकग्राउंड कलर वाला इश्यू सॉल्व. I'm checking it. 1 second. ओके सो आई थिंक इतना ठीक है. देयर इज मुझे भी देखना पड़ेगा सेंटर टैग के लिए. व्हाट इज दैट? इट वाज दैट LIGN center. Okay, I think I need to use the font tag here. Font align center and font. Let me check. I need to check. Anyways, we'll see. No मैम, इश्यू सॉल्व नहीं हुआ. कौन सा कलर वाला? हाँ क्या हो रहा है उसमें? मैम 1 सेकंड में अपना कैमरा आपको ऑन करके बता दे रहा हूँ उस पे लैपटॉप में जो हो रहा है. But I need to stop sharing first, right? ओके. So you okay? कैसे दिखाओगे? This way? आप मुझे पिन कर सकती हैं उसको. Yes, yes. इतना तो हो गया. और अगर मैं यहाँ पे नोटपैड में जाके आपको दिखाऊं तो it's like that. Not you. COLOR, not you. स्पेलिंग मिस्टेक से भी होता है इसमें. हाँ. Yes. सो मैम वो डायरेक्टली आप किस तरीके से कर रही थी? मैं इसको पूरा सेव करूंगा फिर खोलूंगा तो Control S. Just press Control S. Just press Control S. ओके प्रेस किया. Control S. Minimize. और ब्राउजर को रीलोड करो. हुआ? ओके आ गया. सही है. Okay. और मैम कोई और कलर लाना हो तो Change the number or also you can write the name of the color in the double quotes. okay. तो मैम ऐसा कोई लिस्ट नहीं इसके अंदर बता सके कि है. We will learn everything. आराम से. Fine, guys. कलर तो चेंज ही नहीं हुआ. कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा. Okay, so I guess enough for today. अभी इतना करेंगे. On the Moodle I'll share one file जिसमें I think I have already shared the list of the tags, so you can try it. In next session we'll see more tags. एक और बात, next Tuesday I'll be on leave, so इसी सेशन रखा क्योंकि हमारा वीक में एक ही सेशन होता है.